आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन में जो बेसिक थिंग्स की जरूरत पड़ी हमें, परमुटेशन क्यों किया जाता है, जो बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे यूज होता है वो होता है हाउ टू काउंट विदाउट काउंटिंग। हाउ टू काउंट विदाउट काउंटिंग। हम कई बार कुछ थिंग्स कैलकुलेट करते हैं और उनको यदि हम एक्चुअल मेथड से करेंगे वो बहुत लेंथी हो जाते हैं, और हम इनमें परमुटेशंस का यूज करेंगे, प्रॉपर यूज करेंगे, तो हम देखेंगे वही क्वेश्चन बिल्कुल आसान बन जाते हैं। जैसे सबसे पहले मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। पहला फर्स्ट एग्जांपल इज सपोज देयर आर 10 rows. Suppose there are 10 rows, say it is, and each row has 20 students. In a hall, suppose there are 10 rows and each row has 20 chairs. Each row has 20 chairs. In how many ways? How many students can be made seated? Total how many total students can be seated? तो हमें एक एक करके काउंट करने की जरूरत नहीं है, और यहां पर हम क्या कंसेप्ट यूज करेंगे? हम यहां पर कंसेप्ट यूज करेंगे मल्टीप्लिकेशन। हम क्या करेंगे? one row has 20 chairs. One row has 20 chairs and it is total 10 rows has 20 into 10, it is 200 chairs. So maximum of 200 students can be seated. So maximum of 200 students can be seated at a time. So counting में it is permutations counting में हमने इसको डिवाइड किया है दो डिफरेंट पार्ट्स में। एक पार्ट करने जा रहे हैं परमुटेशंस, एक पार्ट हम करने जा रहे हैं कॉम्बिनेशंस। नाउ बच्चे, जब आप इंग्लिश में इंग्लिश डिक्शनरी को उठा के देखेंगे, वहां पे आप देखोगे कि परमुटेशन का मीनिंग कॉम्बिनेशन है, और कॉम्बिनेशन का एक मीनिंग इट हैज बीन रिटन एज ए परमुटेशन। But there is a lot of difference between permutations and combination in mathematics. Permutations क्या है? Permutation का मतलब क्या है? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। पहले definition है, what is the permutations? Permutations है each of arrangement which can be made by taking some or all of a number of things.
is called permutations. Permutation में क्या है? Each of the arrangement which can be made by taking some or all of a number of things is called permutations. हम इसको differentiate करते हैं बड़ा clearly that permutation means arrangement of the things. We are going to arrange in a row, we are going to arrange in a circle, we are going to arrange the things. So how many things we have been given? It may be possible कि total 10 things given है या 100 things given है, or we can say n things given है. And ये भी हो सकता है उसमें से 10 में से हमें 5 को अरेंज करना हो, 100 में से 100 को अरेंज करना हो. So तभी मैंने उसको डिफाइन किया है. This arrangement by taking some all or all of a number of things is called permutations. Then, so the main important the word is here it is permutation means arrangement of the things. Then I am coming to next, it is combination. Each of group or selection which can be made by taking some or all of a number of things, things is called combination. हम यहाँ पर combination को directly लिखेंगे. Combination means selection. Combination means we are to make the group. Like I give you one example कि स्कूल में suppose हमारे पास 40 टीचर्स हैं और 40 टीचर्स में हमने टोटल कमेटी बनानी है 5 टीचरों की. 5 टीचरों की कमेटी बन सकती है डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन. प्राइमरी टीचर्स हैं, ये भी हो सकता है उसमें ये कंडीशन दे दें से मिडिल क्लास टीचर्स और सेकेंडरी क्लास टीचर्स. सो उसको डिफरेंशिएट करके आपको किसी वे से क्वेश्चन दिया जा सकता है. ये भी हो सकता है द स्टूडेंट्स हु आर टू चोजन फॉर पार्टी. सपोज एक क्लास में 50 बच्चे हैं, हमने चूज करना है पार्टी के लिए 10 को. तो जहां पर पार्टी के लिए चूज करना है वहां पर आएगा सिलेक्शन. और वही में जब हमने टोटल से हम 10 बॉयज हैं और उनको हॉकी की टीम में अरेंजमेंट करना है. हॉकी की टीम में अरेंजमेंट करना है तो कैसे अरेंजमेंट कर सकते हैं आप? हर एक बच्चे को हर एक पोजीशन पे 10 पोजीशन है, 10 प्लेयर्स को 10 पोजीशन पे कैसे हम अरेंज कर सकते हैं, वो एक मेथड है. सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज द डिफरेंस बिटवीन अरेंजमेंट एंड कॉम्बिनेशन मीन्स arrangement means permutations, combination or selection means it is combination, or arrangement means permutations. Now I am coming to the first definition of permutation and combination after this. फर्स्ट डेफिनेशन जिसके ऊपर मेनली क्वेश्चन आते हैं दैट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. शॉर्ट में हम लिखते हैं एफपीसी. इट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. If इसकी डेफिनेशन क्या है? द डेफिनेशन इज if an event can happen
if an event can happen in exactly m ways, following it, if an event can happen in exactly m ways, following it, another event happens in happen in exactly n ways. If an event can happen in exactly m ways, following it another event happen in exactly n ways, then both the events in succession can happen by m into n ways. So this is fundamental principle of counting. इसे short में हम FPC भी बोल देते हैं. Suppose if an event can happen in exactly m ways, following it another event happen in n ways. इस इवेंट का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब, इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं. एग्जांपल से आपको इसकी डेफिनेशन जरा समझ आएगी. इसकी डेफिनेशन जैसे है, मैं आपको ले रहा हूं. If a person has to go from station A to station C via station B. If a person has to go from station A to station C via station B, from A to B, there are three ways. From A to B, there are three ways, and from B to C, there are two ways. By how many ways? He can reach at C. इसका क्या मतलब हुआ? एक पर्सन है, उसको जाना है स्टेशन A से स्टेशन C वाया स्टेशन B. It is suppose this is station A, this is station B, this is station C. He has to go to station C via station B, and from A to B there are three routes. You can say it has been given A से B तक जाने के three ways है. From B to C there are two ways. Now जो concept हम कर रहे हैं वो है how to count without counting. एक तो simple way out है. This is the first way. This is the second way. This is third way. This is fourth, and by this fifth and sixth. But हमने क्या करना है? We want our result without counting. हम इस वजह से करेंगे. From A to B, there are three ways. From A to B, there are three ways. And from B to C, there are two ways. From A to B, there are three ways. From B to C, there are two ways. Total number of ways is equal to 3 into 2 is equal to 6 ways. So by total number of ways he can reach up to destination is 3 into 2 6 ways. So event यहाँ पे हुआ कि person can go from A to B. This is event A. Following it, another condition has been given out
क्योंकि वो अभी तक अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचा. तो फॉलोइंग इट अनदर कंडीशन हैज बीन गिवन. फ्रॉम बी टू सी देयर आर टू वेज. अल्टीमेट ही हैज टू रीच बाय सी. So by fundamental principle of counting, the required number of ways are 3 into 2. It comes out to be 6 ways. जो अगला जो the next definition we are going to do in this permutation and combination topic is, it is the sum rule. Sum rule is, suppose a work A can occur in M ways. Suppose a work A can occur in M ways. In M ways, and B occur in N ways. Suppose a work A can occur in M ways and work B can occur in N ways, and both cannot occur simultaneously, and both cannot occur simultaneously, then A or B का मतलब होगा at least one of them. Then A or B, at least one of them can occur in M plus N ways. The sum rule states, suppose a work can be done by M ways, and another work can be done by N ways, and both cannot occur together, then A or B, at least one of them can occur by M plus N ways. अब जैसे पिछला क्वेश्चन, पिछली डेफिनेशन आपको मैंने एग्जांपल लेके समझाई थी, वैसे ही इस डेफिनेशन को मैं क्लैरिफाई कर रहा हूं एक एग्जांपल लेके. ठीक है. सो दैट एग्जांपल इज, सपोज a school badminton team has, it is 6 boys and 4 girls. A school badminton team has 6 boys and 4 girls, and another school badminton team has 4 boys and 2 girls. Suppose a school badminton team has 6 boys and 4 girls, and another school badminton team has 4 boys and 2 girls. Question is, how many single matches played between boys and boys, and between girls and girls.
मैं इसको हम कैसे करेंगे? अ स्कूल टीम हैज, a school badminton team has six boys and another school team has four boys. So total single matches between boys and boys are 24 in number. So total single matches between boys and boys are 24 in number, and total girl matches is equal to, it is 4 into 2, this is 6 matches. So I can say total number of matches possible is equal to total number of matches, single matches possible is equal to 24 plus 6 is equal to 30 matches. एक बहुत बड़ा डिफरेंस है पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में. पिछले क्वेश्चन में हमने किया था a person has to go from station A to station C. वहां पर, और जब हमने कहा था event can occur in m ways, और एक बार स्टेशन A से स्टेशन B तक जाने के 3 वेज हैं. जब A से लेके B तक जाने के 3 वेज हैं, उस समय इवेंट कंप्लीट नहीं हुआ है, वो पर्सन अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचा है, इसलिए वहां पे सम रूल नहीं लगेगा. लेकिन यहां पर जब बॉयज और बॉयज के सिंगल मैचेस हुए तो वहां पे इवेंट खत्म हो चुका था, कुछ आंसर हमारा आ चुका था. दैट मीन्स 24 मैचेस पॉसिबल वो ऑलरेडी आ चुका था. एंड देन जब दूसरे मैचेस सिंगल गर्ल मैचेस हुए तो उस समय इवेंट कंप्लीट था, इसलिए यहां पे लगा है 24 प्लस 6 इट कम्स आउट टू बी 30. और वहां पर क्या थे, दोनों के दोनों इनकम्प्लीट इवेंट थे. इवेंट एक तब कंप्लीट होता जब वो एक ही अरेंजमेंट में सीधा पहुंच जाता. सो दिस इज द बेसिकली डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सम रूल. Now we are going to start with some of the problems based on these two things. The first question is, there are 6 shirts and 5 ties with a student. The total number of ways by which he can go to college with different combination
are, it is, first is, it comes out to be 20, B option is 24, C 30 and D none of these. Now यहां पर हम क्या लिखेंगे, हम करेंगे a shirt can be chosen by, a shirt can be chosen by 6 ways, because we can select any one of the 6 shirts. So a shirt can be chosen by 6 ways, and a tie can be chosen by 5 ways. Total number of ways is equal to 6 into 5 is equal to 30 ways. Total number of ways a different combination can be chosen, that is equal to 30. जब यहाँ पर हमने शर्ट चूज की है तो हमारा इवेंट कंप्लीट नहीं हुआ है, और इवन जब यहाँ पर हमने टाई चूज की तब भी इवेंट कंप्लीट नहीं हुआ है, तभी यहाँ पे लगा है इनटू रूल. इट इज, as you can say, it is FAC rule. Question number 2. There are 5 bus services. There are 5 bus services running between Delhi and Agra. There are 5 bus services running between Delhi and Agra. In how many ways a man can go from Delhi to Agra and come by and return by different service. Options, it is given as 24, it is 25, C 20 and D none of these. Now clearly we have been given there are 5 bus services between Delhi and Agra, and इसका मतलब है a man can go from Delhi to Agra by 5 ways. हम ये कह सकते हैं दिल्ली से आगरा जाते हुए उसके पास 5 ऑप्शन है, वो किसी भी बस सर्विस में जा सकता है, बट फॉर रिटर्निंग he can come by 4 ways. He can come by 4 ways कैसे आया? बिकॉज 5 वे से वो जा सकता है और जिस बस सर्विस से वो गया उस बस सर्विस से वो वापस नहीं आएगा. सो ही कैन कम बाय 4 वेज. सो बाय FPC he can go
and return by 5 into 4, that is equal to 20 ways. So he can go from Delhi to Agra and come back by 5 into 4, 20 ways. नेक्स्ट क्वेश्चन है, there are 6 seats on a railway platform there are 6 seats on a railway platform for passengers to rest. For passengers to have rest. Three persons are there. 3 persons are there. In how many ways? In how many ways? 3 persons are there. In how many ways they can be seated? They can be seated. There are 6 seats on a railway platform, and for passengers to have rest, 3 persons are there. In how many ways they can be seated? Answers given as 18, B 9, C 120 ways, it is D 24. नाउ यहां पर एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगेगा वो ऐसे नहीं लगेगा 6 into 3 is equal to 18 is wrong answer. This is wrong, is not the correct answer. This is not the correct answer. 6 is equal to 3 is equal to 18. यहां पर वही फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग दूसरे वे से लगेगा. वी कैन से फर्स्ट पर्सन कैन बी सीटेड. First person can be seated by 6 ways. Second person can be seated by 5 ways. Third person can be seated by 4 ways. जो फर्स्ट पर्सन है he can sit by 6 ways. उस समय 6 सीट्स खाली थी. सेकेंड पर्सन के लिए 5 सीट्स खाली थी. थर्ड पर्सन कैन सेट बाय 4 वेज. सो टोटल नंबर ऑफ वेज बाय एफपीसी इज 6 into 5 into 4, it is 120 ways. The next problem of permutations and combination based on fundamental principle of counting is that is, next problem is given 7 flags of different colors. Given 7 flags of different colors
total number of different signals can be generated if a signal requires use of two flags, one below the other, or first option is 14, B option is 49, C option is 42, D option is none of these. So given 7 flags of different colors, total number of different signals can be generated. इसका मतलब हुआ एक सिग्नल पूरा होने में हमें 2 फ्लैग की जरूरत पड़ेगी. तो नॉर्मली स्टूडेंट्स का जो एटीट्यूड होगा इस क्वेश्चन में, एक सिग्नल के लिए क्या चाहिए, वन सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स. So total 7 flags are 7 into 2, it comes out to be 14, and which is not a rightful answer. यहां पे इसे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग इस वजह से लगेगा, हम कहेंगे फर्स्ट फ्लैग कैन बी चोजन, फर्स्ट फ्लैग कैन बी चोजन out of 7 flags by 7 ways. First flag can be chosen out of 7 flags by 7 ways. Second flag can be chosen out of remaining 6 by 6 ways. By FPC, fundamental principle of counting, required number of ways, that means total signals generated, is, it is 7 into 6, it comes out to be 42 ways, or 42 signals, total different signals will be generated. Now another example based on this fundamental principle of counting is, the total number of words with or without meaning total number of words with or without meaning of three distinct English alphabets are there. The total number of words with or without meaning of three distinct English alphabets are there. So, there are the 4 options we have been given out. It comes out to be, it is 52 ways, B, it is 676 ways,
C is, it is 26 into 25 ways. And D option is 26 into 25 into 24 ways. The total number of words with or without meaning of 3 distinct English alphabets are here. इसका मतलब है टोटल हमें पता है इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं, वो होते हैं 26 इन नंबर. सो टोटल इंग्लिश अल्फाबेट्स आर, total English alphabets are 26 in number. Now, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था हमने, वैसे ही करेंगे. फर्स्ट वर्ड कैन बी चोजन बाय, फर्स्ट वर्ड कैन बी chosen by 26 ways. Second word can be chosen by left. Why left? Left 25 ways. ये left 25 ways कौन से हो गए? See, we want it distinct English alphabets. यदि ये कंडीशन ना होती इस क्वेश्चन में कि हाउ मेनी टोटल डिस्टिंक्ट इंग्लिश अल्फाबेट्स आर देयर, हम क्या करेंगे? हम करेंगे, डिस्टिंक्ट वर्ड ना होता, हम लिखते फर्स्ट अल्फाबेट कैन, नॉट फर्स्ट वर्ड, आई से फर्स्ट अल्फाबेट कैन बी चोजन. द राइटफुल थिंग होगी, इस वर्ड इज समथिंग एल्स, फर्स्ट अल्फाबेट एंड सेकेंड अल्फाबेट. First alphabet can be chosen by 26 ways. In case the word distinct is not there, तब हम लिखते हैं second alphabet is also chosen by 26 ways and third alphabet also chosen by 26 ways. Required answer होता है 26 into 26. But here we wanted distinct English alphabets. That means first English alphabets can be chosen by 26 ways. Now एक फिलअप होगी, सेकेंड अल्फाबेट कैन बी चोजन बाय लेफ्ट ओवर 25 ways एंड थर्ड अल्फाबेट कैन बी चोजन बाय लेफ्ट 24 ways. Total number of words with or without meaning, total number of words with or without possible are 26 into 25 into 24. That means D part is the right answer. अगला एग्जाम्पल है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के ऊपर. फॉर ए सेट ऑफ 6 ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस, फॉर ए सेट ऑफ 6 ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस, इसका मतलब हुआ एक क्वेश्चंस की दो ऑप्शन है, इट कैन बी ट्रू और इट कैन बी फॉल्स. सो फॉर अ सेट ऑफ 6 ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस, नो स्टूडेंट हैज रिटन all correct answer. For a set of 6 true or false question, no student has written all correct answers, and no student and no two students have
have given same set of, and no two students have given same set of answers, what are maximum number of students, what are maximum number of students in class for this to be possible, for this to be possible. Four options we have been given out, that are, it is 64, it is B 12, it is 11, and D is 63. Now for a set of 6 true or false questions, नो स्टूडेंट, इसका मतलब 6 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका आंसर या तो आइदर ट्रू है और इट इज अ फॉल्स। अब हमें इसमें कंडीशन दे रखी है किसी भी एक भी स्टूडेंट का आंसर दूसरे आंसर से नहीं मैच करता, हर एक एवरी स्टूडेंट हैज डिफरेंट आंसर शीट, और सेकेंड थिंग इज नोबडी हैज गिवन द ऑल करेक्ट आंसर्स, किसी भी बच्चे के सारे करेक्ट आंसर्स नहीं है। एंड इसके लिए ज्यादा से ज्यादा कितने बच्चे एक क्लास में हो सकते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसका ऐसे शुरू करेंगे। फर्स्ट स्टूडेंट, पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा कि आप सोच लो स्टूडेंट्स, इसमें वही जनरलाइज गलती ना करें कि एक क्वेश्चन की 2 ऑप्शन हैं, 6 क्वेश्चन की 2 ऑप्शन होगी 12, दिस इज एब्सोल्युटली वियर्ड, गलत आंसर है। 12 में से एक करेक्ट वाला माइनस कर दोगे तो यू विल फाइंड आउट 11, दिस इज रॉन्ग। बी और सी आर इनकरेक्ट आंसर्स। इसका जो राइटफुल आंसर बनेगा वो ये बनेगा, फर्स्ट क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड first question can be answered by 2 ways. Second question can be answered by again 2 ways. The third question can be answered by 2 ways. And fourth, fifth, and now 6. These all comes out to be 2 ways. Every question can be, so total number of ways, required number of ways of giving answer, of giving answer are 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2, or it comes out to be 2 to the power 6 ways. Required number of ways of giving answer 2 to the power 6 ways, that is 64 ways. But here condition is no student has given all correct answer, since nobody has given all correct answer. Since nobody has given all correct answers, so actual number of ways is equal to 64 minus 1 is equal to 63 ways. ये मैंने 1 क्यों माइनस किया, इसका बेसिक लॉजिक रीजन है क्योंकि जब हम 2 की पावर 6 क्वेश्चंस को 6 क्वेश्चंस को हम आंसर दे सकते हैं 64 वेज से, उसमें से एक शीट ऐसी होगी जिसमें सारे करेक्ट आंसर होंगे, और हमें गिवन है नोबडी हैज गिवन द करेक्ट आंसर, इसलिए वो शीट माइनस कर दी। इट कांट बी द शीट ऑफ एनी स्टूडेंट इन ए क्लास। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेव्स आर 64 minus 1, this is equal to 63 ways. Next problem, a mint per pair
A mint prepares metallic calendars specifying dates, specifying पहले months then dates, months, dates and days in form of monthly sheet, in form of monthly sheets. It has been given one plate for each month. How many types of February calendar, how many types of February calendars should it prepare to serve for all possible possible all possible all possibilities in future years, all possibilities in future year. A option, it has been given out as it is 14, B 49, C 42 ways, and it comes out to be D is it is 7 ways. These are the options we have been given out. Now clearly we want February calendars. See, what we want it, how many types of February calendars possible? We want February calendars. So इसके लिए बड़ा सिंपल सा एक लॉजिकल है, हमने कैलेंडर बनाना है और मेरे माइंड में आता है कैलेंडर को हम कैसे बनाया जाए। कैलेंडर बनाने के लिए मेरे को क्या रिक्वायरमेंट है, मेरे को ये पता होना चाहिए कि फरवरी के कैलेंडर में 1 फरवरी को क्या क्या आ सकता है। जैसे मेरे को 2007 का फरवरी का कैलेंडर बनाना है, तो 2007 के फरवरी का कैलेंडर में अब मेरे को ये पता नहीं है कि 1 फरवरी को क्या था। यदि 1 फरवरी को मंडे था तो मैं कैलेंडर ऐसे बनाऊंगा, 1 को मंडे, 2 को ट्यूसडे एंड वी कैन मेक इट। इन केस 1 को ट्यूसडे है, देन 2 को वेडनेसडे एंड 3 को थर्सडे, इट इज लाइक दिस वे। इस वजह से वी कैन मेक इट डिफरेंट कैलेंडर। सो फॉर ऑल नियर फ्यूचर ईयर्स, एंड आई विल से for near future years, February months are of 2 types. एक तो वो वाले February months होते हैं जिसमें 28 days होते हैं, that is non leap year, और एक वो February month जिसमें leap years होते हैं, उसमें 29 days होंगे। So हम क्या लिखेंगे, total number of February calendar, total number of February calendars for leap years is equal to, it is 7 in number. क्यों?
क्योंकि लीप ईयर में फरवरी मंथ के में क्या आ सकता है, फरवरी मंथ को वही फर्स्ट को क्या हो सकता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे. इट कैन बी एनी वन और 7 days. सो कमिंग फेब लीप ईयर्स में फरवरी के मंथ में फर्स्ट कैन बी ऑन एनी ऑन 7 days. सो टोटल 7 कैलेंडर पॉसिबल. एंड फॉर नॉन लीप ईयर्स, total 7 February calendar. Total 7 February calendars possible. अब क्वेश्चन अराइज होता है, इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करें कि ऐड करें. इसमें अब कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिकॉज अब हमें पता होना चाहिए हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं. हम देख रहे हैं कि हमें कितने कैलेंडर्स चाहिए, और कुछ कैलेंडर हमारे बन चुके हैं. इसका मतलब है इवेंट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है. तो यहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सम रूल, बिकॉज ऑलरेडी इवेंट कंप्लीट हो चुका है. कुछ हमारा आंसर बन चुका है, फरवरी कैलेंडर बन चुके हैं 7. सो रिक्वायर्ड वेज आर required ways are 7 plus 7. It comes out to be 14 ways. Next question is, in how many ways a vowel, a consonant, and a digit can be chosen out of 26 letters of English alphabet, can be chosen out of 26 letters of English alphabet and 10 digits. In how many ways a vowel, consonant and a digit can be chosen out of 26 letters of English alphabet and 10 digits? Option it has been given as 1050, B 105, C 945, and D none of these. So how many ways say these can be chosen? इसका मतलब क्या हुआ? अब हमें पहले पता होना चाहिए कॉन्सोनेंट टर्म क्या है, ये पता होना चाहिए हमें. इंग्लिश अल्फाबेट में 5 वॉवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, और बाकी बचे हुए 21 को हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स. और डिजिट्स डिपेंडिंग करता है, हमें गिवन है इट इज 10 digits. So we will write down the answer. A vowel can be chosen by a vowel can be chosen by 5 ways. A consonant can be chosen by 21 ways. A digit out of given 10 digit. A digit out of given 10 digits can be chosen by 10 ways. So we do write down a vowel, a consonant, and a digit can be chosen by
5 into 21 into 10 ways. That is 1050 ways. Now, one other question of our booklet is, ये हमारी बुकलेट का क्वेश्चन है, the number of all possible selection. The number of all possible selections the number of all possible selections of one or, question number 1 we can say of our booklet, the number of all possible selections of one or more questions, one or more questions from 10 given answers, from 10 given questions. Each question having an alternate. Each question having an alternate is A is 3 to the power 10, B is 2 to the power 10 minus 1, C is 3 to the power 10 minus 1, and D is 2 to the power 10. The number of all possible selections of one or more question from 10 given questions. इस क्वेश्चन में जो कंफ्यूजिंग पार्ट है, जिस बात पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो है ईच क्वेश्चन हैविंग एन ऑल्टरनेटिव. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है अ क्वेश्चन कैन बी, a question can be written as, can be answered as true or false, or the third option is don't know, or third option is don't know. This is the meaning of each question having an alternative. This is important thing. That means one question, it is one question can be answered by three ways. इसका मतलब हुआ one question can be answered by three ways. Second question can be answered by three ways. Third question can be answered by three ways. Similarly, all the questions can be answered by 10th question can be answered by three ways. It is 3 the power, this is 3 the power 10 ways. Now, आंसर इसको देख के लगता है ए पार्ट, बट ए पार्ट इज नॉट द करेक्ट आंसर. हमें क्वेश्चन दिया है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सिलेक्शंस. दिस इज द वे all the questions can be answered. That means total number of ways question can be answered is 3 the power 10. But इसमें एक ऑप्शन ऐसी होगी जब एक स्टूडेंट इसमें लिख देगा, हर एक क्वेश्चन में क्या लिख देगा? डोंट नो, डोंट नो, डोंट नो. जब वो हर एक क्वेश्चन को डोंट नो लिख देगा तो हाउ कैन ए सिलेक्शन इज पॉसिबल? दैट मीन्स
answers can be possible by total number of ways, it can be 3d power 10, but total number of selections possible, total number of selections possible. जिस स्टूडेंट ने एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, दैट स्टूडेंट कांट बी सिलेक्टेड. सो उसमें जो ऑल डोंट नो वाला केस है, हम माइनस कर देंगे. सो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन पॉसिबल इज इक्वल टू 3 × 10 - 1. So this is one of the good question of this fundamental principle of counting. So the correct answer of this first question of our booklet is, it is question number, it is the right option is C part. Fundamental principle of counting पे मैं last question ले रहा हूँ. There are 6 MCQs. There are 6 MCQs in an exam. The total number of sequences possible. The total number of sequences possible if condition is given, first three questions have 4 choices. And next 3 have 5 choices. It is 135. It is B is 15. C option, it has been given as it is 500, and D none of these. So there are 6 MCQs. The total number of sequence, first 3 question have 4 choices. मैं आगे लिखेंगे, first question can be answered by 4 ways. Second question can be answered by 4 ways. Third question can be answered by 4 ways. Fourth question can be answered by 5 ways. Fifth question can be answered by 5 ways. And fifth question can be answered by 5 ways. Sixth question can be answered by 5 ways. Required ways, 4d cube into 5d cube is equal to 64 into 125. It clearly comes out to be D part. It is none of these.